गुड मॉर्निंग मेरे लगते जिगरों, कैसे हो सब लोग? मजे में? जय गणेश। बहुत ही अच्छा टाइम चल रहा है, गणपति का जो है ये उत्सव आ गया है। गणपति अपने आप में विघ्नहर्ता है, विघ्नों को हरने वाले हैं। एट द सेम टाइम गणपति इज द लॉर्ड ऑफ विजडम, बुद्धि के देवता है। तो आप उनसे जो है क्या प्रार्थना करोगे? बराबर मैंने ऊपर लिखा है गणानंत्वा गणपति गुम हवामहे। मैं ऐसे गणपति का आवाहन करता हूँ कि जो मुझे ब्रेन तो दे, बुद्धि तो दे, लेकिन कैसी बुद्धि? रैशनल बुद्धि। बराबर, रैशनल का मतलब होता है अ पर्सन हु इज एबल टू डिसाइड बिटवीन द गुड एंड बेस्ट। गुड और बैड में हर कोई फर्क कर सकता है, कोई फर्क बड़ी बात नहीं है कि ये अच्छा है बुरा है, लेकिन अच्छा और बहुत अच्छा उसमें जो फर्क कर सके दैट इज द रैशनल ब्रेन। ऐसा ब्रेन भगवान हमें दे, हम बेहतर चीज़ों को चूज कर सके और हमारे जीवन में आए हुए विघ्न दूर हो। बाय दिस मैसेज, बाय दिस थिंकिंग वी आर स्टार्टिंग आवर सेकंड चैप्टर इन अकाउंट्स। हम हमारे अकाउंट्स में सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड इट्स नेम इज द ड्यूअल इफेक्ट ऑफ अकाउंट्स एंड टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। अकाउंट के ड्यूअल इफेक्ट, और अर्लियर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, हम लोगों ने उसको लेकर बात की है। आई टोल्ड यू कि डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट, दो इफेक्ट होते हैं, बट वहां तक पहुंचने के लिए वी हैव टू मूव सम स्टेप्स। हमको कुछ स्टेप्स चढ़ने पड़ेंगे, बराबर है। घर में भी जाने के लिए हमको दरवाजे से होकर जाना पड़ता है, देन ओनली वी कैन एंटर इन द रूम इन आवर होम। और वहां से भी फिर अगर अपने रूम तक जाना है देन ऑल्सो वी हैव टू मूव अहेड। सिमिलरली सेम वे, वैसे ही यहाँ पर भी हम लोगों को अकाउंट के ड्यूअल इफेक्ट को पढ़ने के लिए हमको जो है कुछ और चीजों के बारे में सोचना पड़ेगा। वी हैव टू थिंक अबाउट दैट। एंड फर्स्ट वन फ्रॉम वेयर द बिगिनिंग ऑफ अकाउंट, द फर्स्ट स्टेप ऑफ अकाउंट, दैट इज द ट्रांजैक्शन। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांजैक्शन? When any goods or services has sold, okay, against money or money worth, so that event is taken place, that is called the transaction. उसको हम लोग transaction बोलते हैं, सौदा बोलते हैं, okay. And this one you already studied in terminology of account in first chapter. वहाँ पे आपने ये understand किया है, okay. So after understanding the meaning of transaction, the next question is rise, what kind of transaction? So as per its characteristics, transaction is divided into two parts. One is the economic transaction and second is the non-economic transaction. पहले इसको समझा देते हैं non-economic, that transaction which has not taken place in the book of account, जिनको book of account में कोई जगह नहीं है, बराबर है, that type of transaction are called non-economic transaction. Means non-economic transaction does not affect the books of account. Books of account में वो कोई असर डालता नहीं है। जैसे कि मान लो कि you have gone your friend's marriage, आप आपके किसी दोस्त की शादी में गए, तो that is a non-economic transaction. Similarly, आपने किसी को किसी के जन्मदिन पर कुछ गिफ्ट किया, that is a non-economic transaction. Similarly, आपके पिताजी ने आपको जो है अकाउंट्स पढ़ाया, non-economic transaction, because you are not going to be paying a fees against of that. उसके बदले में आपको फीस थोड़ी ना देने वाला। Okay, so all that transactions are non-economic transaction. Is it clear? ऐसे transaction को आप क्या बोलोगे? Non-economic transaction. ठीक है? Similarly, when in accounts also, and earlier I explained this. Suppose one lady nurse is there, if she is providing services in clinic or the hospital, then she get remuneration there. So that is the economic activity, and whatever the transaction will be taken place, that is the economic transaction. And non-economic activity, okay, if she is serving her husband during his illness, then that is the non-economic activity, and that is considered a non-economic transaction because she is not getting any remuneration against of that. Is it clear? So that is the non-economic transaction. Okay.
Now let's talk about the economic transaction. Economic transaction is the subject of books of account. It affects the books of account. ये बुक्स ऑफ अकाउंट को असर डालता है, इफेक्ट देता है, उसके ऊपर अपना प्रभाव दिखाता है. ओके, एंड ड्यू टू दैट रीजन दिस इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ओके, इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट: कैश ट्रांजैक्शन, क्रेडिट ट्रांजैक्शन एंड अदर ट्रांजैक्शन. ओके, so what is the meaning of cash transaction? That transaction, when transaction is taken place and immediate cash is paid or received, vice versa, दोनों बातें हो सकती हैं, then that type of transaction is the cash transaction. Means cash and carry business. पैसा दो सामान लेकर जाओ, या सामान लो पैसा लेकर जाओ. So that is the cash transaction. On the spot, तुरंत फैसला, that is the cash transaction. What is next? Credit transaction. So meaning of credit transaction, where transaction is at present, transaction अभी है, but the payment is near future, or the promise of payment is near future. भविष्य में पेमेंट की बात की गई है कि भाई हम आपको 5 दिन के बाद देंगे, 15 दिन के बाद देंगे, 10 दिन के बाद देंगे. So that is your credit transaction. Apart from these two, one more type of transactions are there, that is the other transaction. यहाँ पर पैसों का लेन देन नहीं है, लेकिन ये आपके धंधे को असर करता है, बराबर है. जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं, बैड डेट. आपने आपसे कोई सामान लेकर गया और उसने जो है आपको पेमेंट किया नहीं, आपका नुकसान हो गया, बराबर है. ना यहाँ पे कैश आया ना कैश गया, बराबर है, लेकिन कैश डूब गया, सिंक हो गया. सिमिलरली आपने कहीं से सामान मंगवाया एंड इट इज थेफ्ट और लॉस्ट और कॉट बाय फायर. आग लग गई, आपने गोडाउन में रखा था, आग लग गई, अपना पैसे का लेना है ना पैसे का देना है. ओके, इवन दो लॉस तो गया है. सो दैट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शंस आर अदर ट्रांजैक्शन. एक और इसके अंदर दूसरा पार्ट है इंटरनल ट्रांजैक्शन एंड एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. अब इंटरनल ट्रांजैक्शन मींस व्हाट? यहां पर भी डायरेक्टली मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी इट अफेक्ट द अकाउंट, बिजनेस के ऊपर असर डालता है. जैसे कि व्हेन यू परचेज द मशीनरी, आप मशीनरी खरीद कर लेके आए एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वैल्यू हैज रिड्यूस्ड ड्यू टू इट्स यूज, और वो वैल्यू जो रिड्यूस हुई, जितना भी अमाउंट रिड्यूस हुआ, दैट इज कॉल्ड द डेप्रिसिएशन. तो जो डेप्रिसिएशन है, दैट इज द सब्जेक्ट ऑफ इंटरनल ट्रांजैक्शन. सिमिलरली सो मेनी थिंग्स आर देयर व्हिच यू डील विद द आउटसाइडर्स. जैसे कि आप आपके बिजनेस के किसी पैटर्न का, किसी चीज का आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, आप प्रीमियम पे कर रहे हो. ओके, सेम में जैसे आप प्रीमियम पे कर रहे हो, आप एडवर्टीजमेंट के ऊपर खर्चा कर रहे हो. ओके, एंड दैट टाइप ऑफ पेमेंट यू आर गिविंग टू द आउटसाइडर. यहाँ पे गुड्स का लेना देना नहीं है, बट ट्रांजैक्शन इज देयर, सो दैट इज कॉल्ड द एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन. नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज राइज्ड, how to identify whether transaction is cash or credit. अब आप कैसे नक्की करोगे कि कोई ट्रांजैक्शन कैश है या कोई ट्रांजैक्शन क्रेडिट है? बिकॉज आप तो अभी नए हो, आप लोगों ने रफ्ता रफ्ता अभी जो है आप लोगों ने अकाउंट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया. दिस इज योर सेकंड चैप्टर. हाउ यू विल एबल टू डिटरमाइन वेदर ट्रांजैक्शन, बिकॉज जब आपको सम करने हैं तो पहले तो आपको यही नक्की करना पड़ेगा कि ट्रांजैक्शन कैश है या क्रेडिट है. देन ओनली यू कैन go ahead. जब मैं ड्यूरिंग फैक्ट सीखूंगा, at that time I will explain you the steps of thinking. Okay, तो वो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. So for that I am showing you something. Just see that. उसको आप देखिए जरा. Now just see this 4 transactions. ये 4 transactions को जरा देखिए. Okay, so you are able to understand whether transaction is cash or credit. Okay, and one more transaction I will write here, then also you are able to understood that transaction is internal or external. Okay,
Now see, in first one I have written cash purchase rupees 1000. 1000 रुपए में सामान खरीदा. वर्ड यहाँ पे क्या दिया हुआ है? What purchase, that is not mentioned. So whenever it is said that cash purchase, so it is always, it means goods purchase. Raw material या और कोई सामान business के लिए खरीदा है. Cash is mentioned and that's why it is the cash transaction. This is cash transaction. Goods sold rupees 2000. 2000 रुपए में गुड्स बेचा. यहाँ पे देखो ऑन कैश या कैश ऐसा वर्ड नहीं दिया हुआ है, उसके बावजूद ये कैश ट्रांजैक्शन है. रीजन इज दैट यहाँ पर किसी पार्टी का नाम नहीं है, बराबर है, किसी का नाम नहीं दिया हुआ है, कोई पर्सनल नेम नहीं है यहाँ पर. सो व्हेनेवर कैश वर्ड इज नॉट गिवन एंड एट द सेम टाइम if any other name is also not given, then that is also cash transaction. वो भी आप कैश ट्रांजैक्शन आप बोलोगे. Is it clear? Next you see properly systematically आपको आइडिया आएगा. Purchase goods, sorry here I have from Ramesh. Purchase goods from Ramesh. Okay. And next is given on cash. दो चीजें दे रखी है आपको. रमेश का नाम भी दिया हुआ है और साथ में ऑन कैश वर्ड भी दिया हुआ है. If name is given and with name the word on cash has mentioned, then that is also cash transaction. Now see the last one. Sold goods to Mr. Karmakar rupees 5000, but word cash is not mentioned. Cash mention किया हुआ नहीं है. So in that situation, this transaction is your credit transaction. आपको कैश और क्रेडिट ट्रांजैक्शन की कसौटी पर ये सेंटेंस, ये वर्ड आपको चेक करने पड़ेंगे. ओके, मींस व्हेनेवर यू डू द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, जब भी आप अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करोगे, ड्यूरिंग दैट टाइम व्हेनेवर यू हैव टू डिटरमाइन और टू चेक वेदर ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट, तो इन वर्ड्स को दिमाग में रखना है. कैश वर्ड दिया है क्या, तो नाम के साथ में कैश वर्ड दिया है क्या, या फिर जो है कैश वर्ड नहीं दिया हुआ लेकिन नाम नहीं है क्या, तो ऑल दिस थ्री कंडीशन ट्रांजैक्शन इज कैश. इफ नेम इज गिवन एंड कैश वर्ड इज नॉट गिवन, देन यू अंडरस्टैंड दैट ट्रांजैक्शन इज द क्रेडिट ट्रांजैक्शन. वो ट्रांजैक्शन क्या होगा? क्रेडिट ट्रांजैक्शन होगा. इज इट क्लियर? दिस इज वन थिंग. नाउ सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. नाउ ये तो पता हो गया यहाँ पे हाउ टू आइडेंटिफाई ट्रांजैक्शन इज कैश और क्रेडिट, बट हाउ यू नो दैट ट्रांजैक्शन हैज टेकन प्लेस. बराबर है, उसके लिए भी तो कुछ होना चाहिए, कुछ एविडेंस होने चाहिए, एंड दैट एविडेंस इज द वाउचर्स. वो वाउचर्स है जो आपको बताएंगे ट्रांजैक्शन हुआ है या नहीं हुआ है. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ वाउचर्स आर देयर इन योर टेक्स्ट बुक? So many patterns of vouchers are given. Just see it. इसको देखते हैं हम लोग. In your page number, old book, पुरानी बुक में पेज नंबर 29 है. Types of voucher is mentioned and it is saying, okay, types of voucher. Sales bill. This is the evidence that sales of goods is taken place. Similarly, purchase bill. Okay, it is the evidence that is showing that purchase of goods is there in business. Similarly, if credit note is mentioned, okay, it is the evidence that you have written the goods which was, sorry, you have received the goods which was sold by you. आपने जो सामान बेचा था वो आपको रिटर्न हुआ है. And similarly, if debit note is there, then it is a purchase written evidence, यानी कि
आपने कुछ खरीदा था और खरीदा हुआ सामान आपने वापस कर दिया है, ये सब अलग अलग टाइप के वाउचर्स हैं। सिमिलरली काउंटर फॉलियो चेक, व्हेन यू डिपॉजिटेड when you withdraw the cash from the bank, so at that time a check or the counter folio, okay, all these are known as the voucher which give the evidence that money has withdrawn from the bank. Similarly, paying slip, when you deposit money in the bank, at that time two folio are there, one is your bank has kept with it and second one bank is returned to you. Okay, so that is the voucher which is the evidence that money or the check is deposited in the bank. Similarly, receipt issued, it is a written certificate of amount received. If you receive something, okay, then you give this kind of receipt. And similarly, expense bill, this is the evidence that paid the check or cash. So these are the different kinds of voucher which are the evidence that transaction has taken place. अगर इसमें से कुछ नहीं है तो फिर आप ऐसा नहीं बोल सकते कि ट्रांजैक्शन हो गया है। सिंपली अगर आप किसी दुकान में जाते हो, परचेज द क्लॉथ, इमीडिएटली वो आपके हाथ में एक बिल पकड़ाता है और नीचे इतना बड़े अक्षर में लिखता है, वो ऐसा करते हैं रोकड़ा, इट मीन्स he received cash, बराबर है, that is the thing, he received cash. Is it clear? Next is your what components are included in the voucher. Voucher में कौन कौन सी बातें होती हैं? तो generally the following contents is covered in the voucher. Each component has significance from the viewpoint of accounting. First is name and address of the issuer, जो उसको issue करने वाला है. Name and address of the voucher receiver. Date is mentioned there. Serial number of the voucher. Amount in figure and word both. Okay. And signature of bills, then signature of receiver, types of voucher and other detail. So different kinds of these things that is mentioned in the voucher, and whenever this voucher is written, okay, whenever money is mentioned, okay, if it is cash is there, तो ये वर्ड लिखा रहता है, अगर कैश नहीं दिया है तो उसमें उधारी लिखते नहीं है, वो समझने वाली बात है। Is it clear? And second thing, one more thing you will determine, if you will see the word which is written in the English, it is always written like this. So suppose it is 3,000, so there are 3,000 only. Okay, and in our Gujarati, it is written like this way, Rokda 3,000 pura. So it shows the psychology. Is it clear? ये भी बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। जब आप अकाउंट या लोग only बोलते हैं, it means there is dissatisfaction, असंतुष्टि है, जबकि यहाँ पर जो है पूरा बोलते हैं means now we are satisfied. ये एक psychological thinking है, and it shows that हमारा culture business में भी जो है कितनी एक piousness रखता है, पवित्रता रखता है, that indicate that after completing this first children, in second topic I will explain you the dual effect of the accounts. Account के dual effect क्या है? First thing is that, and second thing उसके साथ में आपको किस तरह से उसके डेबिट एंड क्रेडिट इफेक्ट को मेंशन करना, शो करना, that I will show you. Okay, bye, see you.